अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। तो नाइन्थ क्लास का फ़िज़िक्स का फेडरल बोर्ड का जो गेस्ट पेपर है वो आपके सामने है। लेकिन ये गेस्ट पेपर इस तरीके से बनाया गया है कि इसमें आपकी तैयारी भी मुकम्मल तरीके से हो जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब इसके अंदर 99 एमसीक्यूज़ हैं, आपकी पूरी बुक में से बने हुए हैं और आपने इन 99 एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करना है। मैं आपको इनके आंसर्स नहीं बता रहा, मैं आप लोगों के साथ ये एमसीक्यूज़ शेयर करूंगा वन बाय वन और आप मुझे इसके आंसर्स बताएंगे और इससे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी जो प्रेपरेशन है वो कितनी है और आपको कितनी मज़ीद प्रेपरेशन की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। जो बच्चा ये 99 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट कर सकता है सही तरीके से, इसका मतलब ये है कि वो जो आपका फ़ाइनल का एग्ज़ाम है उसमें बहुत अच्छे तरीके से अपीयर भी हो सकता है और बहुत अच्छे नंबर भी स्कोर कर सकता है। एमसीक्यूज़ के साथ साथ ये जो 99 एमसीक्यूज़ हैं ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और इन 99 एमसीक्यूज़ के साथ साथ मैं आपके साथ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ और जो एमसीक्यूज़ हैं उसकी फाइल आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, विल इट्स वेलोसिटी बी यूनिफॉर्म? When a body is thrown vertically upwards, its velocity at highest point is 0. Why? And a body moving with uniform acceleration, can the direction of its velocity change? And is it possible that displacement is 0 but not the distance? And when the velocity time graph is a straight line parallel to time axis, what can you say about its acceleration? And why first law of motion is called the law of inertia? And why rolling friction is less than sliding friction? And why vehicles have crumple zones at front and rear end? And why does one get hurt seriously when jumping on a hard floor? And establish and then state a relation between force and momentum. मैं थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ ताकि आपको स्क्रीन के ऊपर जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आए। ओके, तो आगे चलते हैं। Why we lean forward while lifting a heavy load on back? And can a body be in equilibrium? If revolving clockwise or anti-clockwise under the action of a single force? And how can we increase torque by keeping the force constant? And when you are standing on the ground, how much upward force is exerted on you by earth? And why does not this force lift you on earth? And what will be the value of g if body is at height r equal to radius of earth? And on mountains our weight will be less or more? And if the distance between two objects is tripled, what is the decrease in the gravitational force? And if a person takes a bucket full of water to some distance, is there any work done? And give some examples of energies used in our body. And do we have any work when we lift a load from the earth to some height? Prove P is equal to Fv. And how fossil fuels are a source of energy? And what kind of energy is possessed in the following situation? चार situations हैं: a stone lying on the top of roof, a flying aeroplane, a wound upspring of a toy ear, and a speeding train. And what is the value of atmospheric pressure at sea level? Can electric current pass through plasma? And what is the weight of the object appear to decrease when it is immersed in water? And how property of elasticity is used in our body? And how does cooling system of automobiles work? Why transmission lines are given sag? And how evaporation is different from vaporization? And why temperature of a substance does not change while it is changing in state from solid to liquid? और उसके बाद नेक्स्ट है कि वाई डज अ कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम? एंड लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेट एट विच द रेडिएशंस आर इमिटेड डिपेंड? And what are the applications and consequences of radiations? What is meant by machines and geophysics? And the sun is only 150 million kilometers away from the earth. Write this as an ordinary whole number and in scientific notation. And what is a stopwatch? Why is the least count of a mechanical stopwatch you have used in the laboratory? And how can we measure the volume of an irregularly shaped solid and describe the different stages of scientific method? उसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें प्रूव दैट एस इज इक्वल टू ये जो आपकी सेकंड जो इक्वेशन है ये आपने लॉन्ग के लिए करना है। एंड अ कार हैज़ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर स्क्वायर सेकंड फॉर हाफ मिनट and find the distance traveled during this time and the final velocity of the car. And what is the resolution of vector? Find the x and y components of a resultant vector f which are lying at an angle theta with x axis.
Define the states of equilibrium. Explain these states with reference to the center of gravity. Define centripetal force and derive its formula. And discuss motion of two vertically moving bodies attached to the end of a string that passes over a frictionless pulley. And state Newton's law of gravitation and calculate mass of Earth with the help of it. The acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.62 meter per square second, and the radius of the moon is 1740 kilometer. Find the mass of the moon and define kinetic energy and derive its formula. And a machine is 12% efficient. If useful work done by the machine is 6 joules, then calculate the total energy consumed by the machine. State Pascal's law and explain the working of hydraulic press, and define the rate of flow of heat through a solid object. Also explain the factors upon which it depends, and find the quantity of heat needed to melt 100 gram of ice at minus 10 centigrade into water at 10 centigrade. Specific heat of ice is 2100 kilojoule kilo per joule per kilo, and specific heat of ice is 4200 or latent heat of fusion of the ice is 6000. ये आपके सामने क्वांटिटीज़ हैं, तो ये न्यूमेरिकल आपने करना है. एंड डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड विच रूल्स आर हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग सिग्निफिकेंट फिगर्स. एंड योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे. फाइंड द ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकेंड. तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं. उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब आपके जो MCQs हैं इनकी तरफ. तो MCQs आई विल जस्ट शो यू एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दीज MCQs बाय योर सेल्फ. तो साथ साथ आप लोगों ने अटैम्प्ट करते जाना है लाइव क्लास के अंदर ही, और फिर बाय द एंड ऑफ द डे, बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पता चल जाएगा कि वेयर यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग. तो पहला क्वेश्चन है, द फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई इज एन एग्जांपल ऑफ. किस चीज़ की एग्जांपल है? लीनियर मोशन की, सर्कुलर मोशन की, रैंडम मोशन की, या रोटेटरी मोशन की. अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन द फर्स्ट सेकेंड? 100 मीटर्स, 10 मीटर्स, 50 मीटर्स या 5 मीटर्स. Okay, rate of change of velocity is known as displacement, acceleration, distance या relative velocity. A ball is thrown vertically upwards. Its velocity at the highest point is 10 meter per second, 0, 10 meter per square second या none of these. Uniform velocity with which paratrooper comes to ground is called orbital velocity, horizontal velocity, terminal velocity या variable velocity. LIDAR gun is light detection and ranging dash gun, ranging velocity gun, speed gun, acceleration or momentum. A train is moving at a speed of 36 km per hour. Its speed expressed in meter per second is 10 meter per second, 20, 25 or 30 meter per second. Okay, now spinning of earth is a type of rotatory, translatory, circular or vibratory motion. The distance time graph for an object moving with variable speed is straight line parallel to vertical axis, straight line parallel to time axis, straight line passing through origin या curved line. A car starts from rest. It acquires a speed of 25 meter per second after 20 seconds. The distance traveled by the car during this time is 31.25 meter, 250 meters, 500 meters या 5000 meters. Okay, when an object is moving with uniformly changing speed, then the slope of the speed time graph determines the magnitude of displacement, velocity, acceleration या momentum. तो आपने साथ साथ ना आंसर जो है वो लाइव चैट में लिखते जाने हैं, ठीक है. एंड देन बाय द एंड ऑफ दीज MCQs को एक बच्चा जो है, बेशक सारे MCQs को जो करेक्ट ऑप्शन हैं उनको आप एक कमेंट की सूरत में भी लिख सकते हैं ताकि सारे बच्चों का फ़ायदा हो जाए. अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 30 मीटर. आफ्टर 2 seconds इट्स हाइट फ्रॉम द अर्थ विल बी 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर या 5 मीटर. अच्छा, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑफ 20 ग्राम मैस इज 2 न्यूटन ऑन अर्थ, 10 न्यूटन ऑन अर्थ, 20 या 200 न्यूटन. एंड देन centripetal acceleration AC is equal to V square by R, G square by R, MA or MV square by R. अच्छा, how many times centripetal force will increase if the mass of a body moving with uniform speed in a circle is doubled? 2 times, 4 times, 6 times या 8 times. Okay, a block of mass 4 gram is supported by a string. The tension in the string is 20 Newton, 40 Newton, 4 Newton या 0 Newton. Okay, in System International, the unit of momentum is G. Momentum का unit क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड या न्यूटन पर स्क्वायर सेकेंड, न्यूटन मीटर या न्यूटन सेकेंड. Okay, and if radius of cycle in which the object is moving is doubled, then centripetal acceleration becomes double, 3 times, 4 times या half.
इनर्शिया डिपेंड्स ऑन, इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है? फोर्स पे, वेलोसिटी पे, मास पे, या किसी पे भी नहीं। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम? एनएम, के, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन सेकेंड, और न्यूटन पर सेकेंड। अच्छा, फिर उसके बाद ये P1 माइनस PI माइनस PT इज ओवर T इज इक्वल टू मास, एक्सेलरेशन, M over A और MA। अच्छा, a string is stretched by two equal and opposite forces 10 Newton each. The tension in the string is 0, 5 Newton, 10 Newton or 20 Newton. And which is not a vector quantity? इनमें से कौन सी जो quantity है वो vector नहीं है? Momentum, pressure, weight या torque? Okay, the velocity and acceleration of a body moving with uniform speed in the circular path will be in the same direction, in the opposite direction, mutually perpendicular या equal. सोना नहीं है, आप लोगों ने लेक्चर डट के साथ मेरे अटेंड करना है और आपने साथ साथ ऑप्शंस बताते जाने हैं, ठीक है? द एडिशन ऑफ टू और मोर वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल वेक्टर विच इज़ टर्म्ड एज रिजल्टेंट वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट और नन ऑफ दीज। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ कैन बी फाउंड बाय द फार्मूला एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर अंडर रूट और tan theta Fy over Fx. The center of gravity of triangular shaped body is the point of intersection of its medians, the point of intersection of its altitudes, the point of intersection of its diagonals या center of the triangle. उसके बाद the momentum of an object of mass 5 kilogram moving with velocity 100 centimeter per second is 0.4 newtons, 4 newtons, 400 newtons or 4,000 newtons. A pencil just balanced at its tip is in unstable equilibrium, stable equilibrium, neutral equilibrium या dynamic equilibrium. And the number of forces that can be added by head to tail rule is 2, 3, 4 or any number. टॉर्क किस चीज़ पे डिपेंड करती है? फोर्स पे, मोमेंट आर्म पे, एक्सेलरेशन पे या बोथ A and B पे? The number of perpendicular components of a force are 1, 2, 3 or 4. A body is in equilibrium when it is acceleration is uniform, speed and acceleration are uniform, या acceleration is uniform. A racing car is made stable by increasing its speed, lowering its center of gravity, या decreasing its mass, या decreasing its width. A force of 10 Newton is making an angle of 30 angle with the horizontal. Its horizontal component will be कितना होगा? 4 Newton, 5 Newton, 7 Newton या 8.7 Newton. अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 0, 10 न्यूटन, 0.5 न्यूटन या 20 न्यूटन। अच्छा, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट अ हाइट एच, जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट क्या होगी? एम वी स्केयर ओवर एच, एम वी ओवर आर प्लस एच, एम वी स्केयर ओवर आर प्लस एच, 2mv ओवर आर प्लस एच। ओके, 37 पे हम लोग MCQ नंबर 37 पे आ गए हैं। मेरा बच्चों गला पका हुआ है, गला ख़राब है, लेकिन उसके बावजूद भी देखें मैं आप लोगों के साथ लगा हुआ हूँ एंड वी आर डूइंग दीज MCQs टुगेदर। और साथ साथ आप दुआ भी करते जाएं कि अल्लाह ताला आपको इम्तिहानात में कामयाब करे। और चैनल अगर आपने नहीं अभी तक भी सब्सक्राइब किया तो फिर आप बहुत ही शरारती बच्चे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। अ सैटेलाइट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। इफ़ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज़ इंक्रीज फ्राम r to 2r, इट्स वेलोसिटी विल बी, क्या हो जाएगी उसकी वेलोसिटी? v over 2 under root 2v, v over 2 और v square. The orbital speed of a low orbit satellite is 0, 8 meter per square second, 800 meter per square second या 8000 meter per square second. g की वैल्यू कितनी होती है? ये तो यार आपको पता होना चाहिए, फ़ौरन से आपको बता देना चाहिए। मून completes its one revolution around the earth in कितने दिनों में करता है? ये आपने बताना है। ऐसा यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ क्या है? ये पता होना चाहिए आपको। द रेट ऑफ डूइंग वर्क विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड फोर्स, पावर, एनर्जी या वर्क। एंड द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस कवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, पावर, वर्क या एनर्जी। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क इन सिस्टम इंटरनेशनल? एंड व्हाट विल बी द पावर ऑफ अ मशीन डूइंग 10 joule वर्क इन 5 seconds? And the amount of work done in carrying a bag of mass 10 kilogram to a height of 3.6 meter is 360 joule, 36 joule, 3.6 joule और 3600 joule. Okay, so next हम आ जाते हैं the relation between mass and energy predicted by Einstein is
क्या है यार, ये तो मुझे भी आता है, E=mc², ठीक है। अच्छा, एंड 1 HP इज इक्वल टू, एक हार्स पावर कितनी होती है, 674 वाट की, 740 वाट, 746 या 840 वाट। एंड वर्क डन विल बी ज़ीरो इफ़ द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़, तो ये आप देख लें, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg एट अ हाइट h इज़ कितने जॉल्स, 10 हॉर्स, 100,000 या नन ऑफ दिस। एंड एट हाइट h, ठीक है, तो h पे आपने बताना है, हाइट पे, ठीक है। द वर्क डन इन लिफ्टिंग अ ब्रेक ऑफ मास 2 kg थ्रू अ हाइट ऑफ 5 मीटर ग्राउंड विल बी कितना होगा, 2.5 जॉल, 10 जॉल, 50 जॉल या 100 जॉल्स। If the mass of a body is halved and the velocity is doubled, then its kinetic energy will be कितनी होगी उसकी kinetic energy। Hooke's law is applicable to solids, liquids, gases या all of these। And what should be the approximate length of a glass tube to construct a water barometer? कितनी होनी चाहिए, 0.5 मीटर, 1 मीटर, 2.5 मीटर या 11 मीटर। At sea level, the atmospheric pressure is about, कितना होता है atmospheric pressure। System international unit of strain क्या है, न्यूटन है, जोल है, यूनिट लेस है या वाट है। And if the mass of 200 cubic centimeter of stone is 500 gram, then its density कितनी होगी उसकी। And which one of the following substances is the lightest one? Copper, mercury, or aluminium or lead। Pressure of a liquid depends on depth in the liquid, depth and mass of the liquid, depth and the density of the liquid, or density and the weight of the liquid। And if a matter has fixed volume but not permanent shape, then the matter is in the plasma state, gaseous, liquid or solid state। And the quantity of heat required to convert 1 kilogram of a liquid to gaseous state of its boiling point is called latent heat of fusion, latent heat of vaporization, convection, or none of these। And then the next is coefficient of volume expansion are as compared to coefficient of linear expansion is कितने टाइम बड़ा होता है, 1 times, 2 times, 3 times या 4 times। वाटर कॉन्ट्रैक्ट्स फ्रॉम 0 to 4 centigrade, 3 to 4, 2 to 4 और 5 to 6। okay, then which of the following material has large specific heat, clay, water, mercury या glass। and 100 centigrade कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। and what will be the value of beta for a solid which alpha has a value of 2 multiplied by 10's power minus 5 k's power minus 1। Convert 50 centigrade temperature into Fahrenheit scale। And which one of the following material has the large specific heat, copper, ice, water या mercury। and mercury is used as thermometric material, भी क्यों यूज़ किया जाता है। and which material is better for insulation, glass, brass, air या fiberglass। and heat from the sun reaches the earth by radiation, convection, conduction या none of these। and rooms are heated using gas heaters by conduction only, convection and radiation, radiation only या convection only। and in solids heat is transferred by radiation, conduction, convection या absorption। and which of the following is a good radiator of heat, a shiny silvered surface, a dull black surface, a white surface या a green colored surface। and what is the cause of land and sea breeze, greater specific heat of water या low freezing point of water या less specific heat of water या high boiling point of water। and then metals are good conductors of heat due to किस वजह से होते हैं, free electrons की वजह से, big small size of molecule, big size of molecule या rapid evaporation of their atoms की वजह से। and sea breeze blows land to sea at night, from land to sea in daytime या in daytime only। cause of land and sea ब्रीज क्या होती है, ग्रेटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, लो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर या हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिराइव्ड यूनिट, सेकेंड, मीटर, किलोग्राम या न्यूटन। एंड द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोलेटेड न्यूक्लाई ऑफ द एटम इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या सॉलिड स्टेट फिजिक्स। एंड 1 टेरामीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और ये आगे ऑप्शंस हैं 10's power 12, 10's power 9, 10's power 6 या 10's power 3। एंड लीस्ट काउंट ऑफ सक्रिय गेज कितना होता है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0036 कितना है,
एंड सिस्टम इंटरनेशनल कंसिस्ट ऑफ कितने बेसिक यूनिट्स हैं इसके, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, टेम्परेचर किसकी क्वांटिटी है, 1 नैनोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम या स्पीड, एंड द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कितना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, पास्कल, न्यूटन, किलोग्राम या नन ऑफ दीज। एंड ये आई डोंट नो वेदर यू कॉल इट लैम्डा और व्हाट, तो ये आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये कितने सेकंड्स के बराबर होता है, आई थिंक इट्स अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इंटरवल ऑफ 200 हर्ट्स पर सेकंड। और आई डोंट नो बिकॉज मुझे 9th की फिज़िक्स पढ़े हुए भी 9 से ज़्यादा साल तो हो ही गए होंगे। आई डिड माई मैट्रिक इन 2003, सो इट्स बिन 20 years, and since I went into this English thing, I've forgot the taste of these signs as well. So you guys better tell me this कि ये क्या है। तो न्यूटन किसके बराबर होता है, किलोग्राम मीटर के, किलोग्राम पर स्क्वायर सेकंड के, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड के या किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकंड के। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट क्वांटिटी, 0.01 ग्राम, 2 मिलीग्राम, एंड अभी ये यहाँ पे फिर मैं फंस रहा हूँ, 5000 नैनोग्राम। अच्छा 275.00 हैज़ कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं इसमें, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज़ इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ये आपने बताना है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो हो रहे होंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कौन सा है। एंड मेरा गला भी जवाब दे गया। व्हाट आर द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट 0.00450 किलोग्राम, 2, 3, 5 या 6। एंड ये इतनी बड़ी सारी रकम है तो इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इस तरह की लाजमी नहीं है कि ये क्वेश्चन आए, इसी तरह का आपको क्वेश्चन आ सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। सिग्निफिकेंट फिगर्स इन अ नंबर आर all the accurately known digits and the first doubtful digit, all the digits, all the accurately known digits and all the accurately digits and all the doubtful digits। तो ये हैं जनाब आपके 99 और ये लास्ट में 100, 1.45 इसको राउंड करें तो कितना बनता है, 1.5, 1.4, 1.45 या 1। तो मेरे प्यारे बच्चों 100 MCQs और ये शॉर्ट क्वेश्चंस अराउंड ये बनते हैं 40, यस round about, no not 40, yes 35 क्वेश्चंस बनते हैं शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने करने हैं, और आपने करने हैं जी 15 आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो जो मेरा बच्चा या बच्ची ये वाले क्वेश्चंस कर लेते हैं, मेरा बेटा बेटी, तो इंशाल्लाह उनका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। और जब आपका पेपर हो जाएगा तो देन यू विल कम एंड यू विल टेल मी कि आपका पेपर कैसा हुआ, एंड आई विल शेयर द आंसर की ऑफ योर MCQs पेपर एज वेल। तो उसमें भी फिर आप मुझे आके खुशी खुशी से बताएंगे कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ। तो अभी आपने ये करना है कि आपने इस वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बाकी जो बच्चे हैं वो भी इस लेक्चर से फ़ायदा उठाएँ और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से करें। तो जुड़े रहें चैनल के साथ और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एंड शाबाश, बहुत अच्छे तरीके से आपने पूरे लेक्चर को अटेंड किया, और इसी तरह से आपने डट के मेहनत करके आपने पेपर्स देने हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।